Hello everyone, welcome to the Hindu editorial analysis. This is the 9th session. एथिरे हमें 7th October ru 12th October भितरे हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस करिवा. दीटा इंपोर्टेंट स्कीम विषय रे आज मो डिस्कशन करिवि which is very much relevant for your examination. या व्यतीत आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक मानक ऊपर मध्ये हम डिस्कशन करिवा लाइक ट्रांसफॉर्म वर्कप्लेसेस इनटू सपोर्टिव स्पेस. याकू डिस्कस करिवार रीजन होउची कि ये आपनकर इकोनॉमिक्स जेतरा हम पढुचे पेपर 3 रे जीएस पेपर 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस सब टॉपिक हैप्पीनेस एठी हम डिस्कस करछे अबाउट मेंटल स्ट्रेस. पीपल अटेंडेड ग्रोथ, पीपल अटेंडेड डेवलपमेंट, स्टिल दे आर कमिटिंग सुसाइड. हमको देखिवा को मिलुची यूथ माने बहुत यूथ दे आर कमिटिंग सुसाइड. जो माने प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छे दे आर कमिटिंग सुसाइड. Even if bureaucrats are committing suicide, cinema stars, Bollywood stars, Hollywood stars, they are committing suicide. So what is the reason behind all those things? Whether the measurement of the economy in terms of GDP, GNP, whether we failed to measure the economy, whether we failed to measure the actual human satisfaction. आमे GDP, GNP को यूज करछे ह्यूमन सैटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करिया पई ना केवल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करिया पई. by HDI human development index, green GDP, ये सब को हमें कौन पे यूज करछे to measure the satisfaction that we have attained or to show the quantitative and the qualitative aspect of the economy only. एही कारण मानक पई ये फर्स्ट टॉपिक ऊपर आज हम डिस्कशन करिवा. मोर और लेस फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक दे आर वेरी मच इंटररिलेटेड. सेकंड टॉपिक इज ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज इन इंडिया. मेंटल हेल्थ इश्यू हबा कारण रु इंडिया रे देयर इज अ इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, देयर इज अ इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी बा इकोनॉमिक लॉस मध्ये हमें करूचे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ह्यूमन रिसोर्स लॉस करूचे हमें. सो मेंटल हेल्थ कहला हमें कोन बुझुचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डेफिनेशन अनुसार व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ and how to protect this mental health, how this mental health will act as a development of the human resource or how it will contribute to the GDP of the country. ये सब टॉपिक को हम एथरे कवर करिवा. थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिएटिव इकोनॉमी. क्रिएटिव इकोनॉमी हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, इवन क्वाटरनरी, क्वीनरी सेक्टर मानक ऊपर मध्ये डिस्कशन करथिले इकोनॉमिक्स क्लास रे. आज क्रिएटिव इकोनॉमी ऊपर डिस्कशन करिवा. यार डिफरेंट एस्पेक्ट अछि एवं यार इंपैक्ट कोन या ऊपर आज आलोचना करिवा. फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट रो अछि मुद्रा योजना एवं मिशन शक्ति. यार मुद्रा योजना बेसिकली जो माने नुवा एंटरप्रेन्योर सेमान को फंडिंग करिया पई ये योजना अछि. एथरे तीनटा स्कीम अछि, तीनटा स्टेज रे एठी लोन मिले. कोन कोन स्टेज ताको डिस्कस करिवा. मिशन शक्ति बेसिकली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम. वुमेन एम्पावरमेंट पई मिशन शक्ति अछि. मिशन शक्ति इज वेरी मच हाइलाइटेड. समस्त देखुथिबे न्यूज रे बा होर्डिंग रे देखुथिबे मिशन शक्ति ऊपर. तो ये पांचटा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आज हम डिस्कशन करिवा. या व्यतीत आउ किछि टॉपिक मध्ये एडिटोरियल लास्ट वीक रे आसीथिले बट दे आर वेरी मच रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल रिलेशन. आईआर रिलेटेड टॉपिक को वीकली एनालिसिस साधारणतः करा जाय नाही. जेतेबेले हम ओसीएस बा यूपीएससी मेंस पई पढुचे सेतेबेले एट द एंड ऑफ द ईयर गोटे वर्ष परे इट मींस एग्जाम रो 2 मास पूर्वरु बा 3 मास पूर्वरु एंटायर आईआर कंपाइलेशन को पढिबा उचित. दिस इज द प्रॉपर वे फॉर आईआर ओनली, इंटरनेशनल रिलेशन. काहे कि ना लेट्स से वर्तमान इजराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस चलिछि बा रशिया यूक्रेन रो क्राइसिस ऊपर हम डिस्कशन करथि. एठी कोन होय ना डे बाय डे एठी अनेक गुटे डेवलपमेंट हमको देखिया पई मिलियो. केतेबेले किछि सम ऑफ द स्टेट्स और सम ऑफ द नेशन स्टेट इंटरनेशनल रिलेशन ने तम स्टेट टर्म को यूज करथि, दैट इज अ नेशन स्टेट और अ कंट्री. सम ऑफ द नेशन स्टेट्स दे विल सपोर्ट अ पार्टी, दे विल बी इन वन साइड बा 4 मास 6 मास पर देखिबे दे विल चेंज देयर साइड, आ गुटे साइड को जिवे. सो देयर इज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी गोइंग ऑन बा अनेक गुटे बायलैटरल मल्टीलैटरल फोरम रे बा ग्लोबल फोरम रे अनेक गुटे चेंजेस देखिया पई मिले थाए. जेहेतु ए सब चेंजेस हमको देखिया पई मिले एकम एंड ऑफ द डे इट मींस जस्ट एग्जाम पूर्व पढ़वाटा बेटर. सो लास्ट वीक रे वर्तमान जेहेतु विभिन्न प्रकार ग्लोबल क्राइसिस कंटिन्यू होउची चलीची ए कारण रु हिंदू एडिटोरियल ले अनेक गुटे टॉपिक आसीतला रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल रिलेशन. से सब टॉपिक को ऑलमोस्ट हमें वर्तमान पई स्किप करछे, वीकली एनालिसिस रु स्किप करछे. ताको हम ईयरली एनालिसिस रे देखिबा बा जस्ट एग्जाम पूर्व से सब टॉपिक को हम कवर करिया. ता व्यतीत ताकू छाडी देला पर रेस्ट ऑफ द टॉपिक जहा अछि से सब एठी कवर होय. चलो तो डिस्कशन करिवा आगु जिबा. तो हम ऑलरेडी पूर्व डिस्कशन करि सारछि कि करंट अफेयर हम पई इंपोर्टेंट काहे कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ करंट अफेयर. अपन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन न कथा कोंतु बा मेंस एग्जामिनेशन न कथा.
प्रिलिम्स हो बा मेंस हो एथिरे ग्रेजुअली करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ी बढ़ी आसुची बा नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन करंट अफेयर सेक्शन क्वेश्चन वर्तमान इंक्रीज होची सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बढ़ुची सब्जेक्टिव रे भी बढ़ुची सब्जेक्टिव रे ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेंस क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड करंट अफेयर ओरिएंटेड हे सो ए कारण मानक पई हमको करंट अफेयर पढिबा दरकार देन व्हाट इज द एग्जैक्ट सोर्स को सोर्स रे हम पढिबा दरकार व्हाट इज द एग्जैक्ट सोर्स कोन रही हम पाकर दरकार ना सेम जो माने नुआ लर्नर सेमान को पई कहूची सोर्स हमें द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पढिबा दरकार डेली बेसिस रे इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली बेसिस रे आसे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऊपर ये कंसंट्रेट करे योजना कुरुक्षेत्र मंथली मैगजीन ज्योग्राफी एंड यू डाउन टू अर्थ ये सब ज्योग्राफी रिलेटेड बा एनवायरनमेंट रिलेटेड मैगजीन्स फ्रंटलाइन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऊपर अगेन फोकस करे वंस इन फोर्टनाइट एटा गोटे 15 दिन को थरे मैगजीन आसे वर्ल्ड फोकस इंडिया रो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन करता है साइंस रिपोर्टर दिस इज फॉर योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब होउछ हमर बेसिक सोर्स जहा को फॉलो करबा दरकार वर्तमान जो माने नुवा एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम पे जो माने नुवा लर्नर आज देखुछन से माने क्वेश्चन करिवे सर एते गोटे टॉपिक प्रैक्टिकली कोन संभव हम पे एते गोटे टॉपिक पढी परिबे सो यार बेस्ट आंसर होउछ कि समस्त एटलीस्ट द हिंदू पढन द हिंदू पढिला पर आपन को डाउट आसीबो नो डाउट जहां भी डाउट आसीबो ई सब डाउट को हम एठी ही क्लैरिफाई करबा मोस्ट इंपोर्टेंट होउछ आपन को पे एडिटोरियल को वीकली एनालिसिस मु करूची एठी ऑन एवरी संडे ए क्लास आसुची हमर ए क्लास रे लास्ट वीक रो जहां इंपोर्टेंट एडिटोरियल विथ रिस्पेक्ट टू आवर एग्जामिनेशन ये सब को हम एठी डिस्कशन करबा तो ताको समस्त पढंतु तापर डाउट आसले लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन थ्रू रे जणांतु एंड आई विल गेट बैक टू यू तापर हम पुनी डिस्कशन करबा एवं रेस्ट ऑफ द सोर्स जहां रहला ये सब को आई एग्री कि एते गुडे सोर्स को कवर करबा इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एन एस्पिरेंट so for this purpose in future what we'll do we'll combine all these sources and we'll compile a current affair version which is very much required for your civil service examination ये सब को न पढिले स्किप करले चलिबो यार गुटे कंपाइलेशन हमें आनिबा फ्यूचर रे बट वर्तमान पई as of now please go through the hindu editorial at least on day to day basis editorial जदि बुझी होनी editorial साधारणतः इनिशियली बुझी हुए नाही काहे कि बुझी होंगे editorial because there are so many topics or subjects which are involved आज economics related question topic अछि तो काली law ऊपर आसुची काली security ऊपर आसुची तो काली society ऊपर आसुची next day रे IR ऊपर question आसुची तो आउ केबे आपनकर टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक आसुची सो सब टॉपिक ऊपर गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक नॉलेज रहिला परे द हिंदू एडिटोरियल को इजीली बुझी हुए तेणु आपण पढंतु बेसिक गुडा को फास्ट क्लियर करंतु ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी एटलीस्ट आपण कहबी इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटी सिक्योरिटी इशू सोशल जस्टिस ई तीन चारटा पेपर को आपण एटलीस्ट आपण सब्जेक्ट कवर करिया पे पड़ी जहां सिलेबस रे अछि ई चारटा कला पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक बुझी पारे सो कोन कोन कहली पॉलिटी एंड गवर्नेंस देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट सोशल इश्यूज सोशल जस्टिस एटलीस्ट ये चारटा पेपर को मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द हिंदू एडिटोरियल एति की पढंतु तापर देखिबा मोस्ट ऑफ द थिंग आपण बुझी परिबे 70-80% एति की पढला पर ताले को पोर्शन को फोकस करिवे द हिंदू रे एवं को पोर्शन को फोकस करिवेनी जो गुडा को पॉलिटिकल न्यूज़ अछि जो गुडा को लोकल न्यूज़ अछि से सब को स्किप कर स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज डेथ अवार्ड रिलेटेड टॉपिक ये सब को स्किप कर देबे रिमेंबर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज नेवर अबाउट फैक्ट एंड फिगर एटी फैक्ट फिगर रा किछि भी वैल्यू नाही एटी फैक्ट फिगर रा किछि भी वैल्यू नाही ताले कोन पढिया पई पडिबो आपन को एनालिसिस करिया पई पडिबो क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस यही आसीबो क्वेश्चन यही आपन को क्वेश्चन में आसी सो ताले को पॉइंट ऊपर फोकस करिवे ना सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज तो जेमति कि कांसेप्ट्स रिलेटेड टू पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन हंगर ये सब जे अपन को सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हला देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बा जदी कोन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो इंपोर्टेंट वर्डिक्ट अछि ताको पढिबे सिक्योरिटी इश्यूज जदी किछ अछि लाइक एलडब्ल्यू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड इश्यूज मिलिटेंट्स इन जम्मू कश्मीर बा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रे इंसर्जेंसी साइबर क्राइम कौन कहली साइबर क्राइम ये सब टॉपिक को भला भाबरे पढिया दरकार देन इज फॉर वल्नरेबल सेक्शन आपन को किया आछनी मु कहबी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी ओबीसी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी देन वुमेन थर्ड जेंडर है ना पोर people suffering from chronic disease people those who are affected by natural calamity ये सब टॉपिक पढिबे देन आईआर इंटरनेशनल रिलेशन ने मोस्टली देखिबे कि नेबरिंग कंट्री मानकर इंपैक्ट कोन इंडिया ऊपर
बदे सेठी कोनोस प्रकार चेंजेस होउची ताले इंडिया ऊपर तार केमती इंपैक्ट पड़छ बा कोन होउची एटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट ताको बुझिया पई सिलेबस को प्रॉपर्ली जानिबे एवं माइक्रो सिलेबस एनालिसिस करिवे मु सब बेले कोए प्रत्येक सब्जेक्ट रो माइक्रो सिलेबस एनालिसिस मध्ये अछि थिबो आपण पाखरा एक्सपेक्ट इकोनॉमिक्स पढिला वाला क्लास रे मु इकोनॉमिक्स रो माइक्रो सिलेबस ऑलरेडी दे देछि टॉपिक कोन एवं से टॉपिक रे को सब टॉपिक को आपण को फोकस करिवार अछि सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स डिस्कशन फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कशन करबा अबाउट ट्रांसफॉर्म वर्क प्लेसेस टू सपोर्टिव स्पेस ये प्रथम कथा ये टॉपिक ऊपर हम काहे डिस्कशन करूचे यार रिक्वायरमेंट कोन वर्तमान डिस्कशन करिवा रिक्वायरमेंट होची मु ऑलरेडी वर्तमान आज आरंभ पहिली ए सेशन रो कि वर्क प्लेस बा वर्कलोड वर्क प्रेशर एते अधिक हो जाउची कि पीपल आर कमिटिंग सुसाइड किछि दिन तळे न्यूज रे समस्त देखिथिबे कि गोटे 22 ईयर आई थिंक 22 ईयर ओल्ड यंग मैन कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर एंड ही वाज अर्निंग lakhs and lakhs rupees in his as remuneration बहुत अधिक टंका ताको remuneration मिलता still that person committed suicide हमें अधिक टंका इनकम करबा वर्कलोड सही न पारी सुसाइड करबा how far it is justifiable so एक कुछ वर्क प्लेस को हमें ट्रांसफॉर्म करबा को टाइप ना गोटे सपोर्टिव स्पेस को गोटे सपोर्टिव एनवायरनमेंट को हमें को ट्रांसफॉर्म करबा पे खोज So there is alarming rise in the suicides among young professionals. Globally, जदि हमें देखिवा suicide increase होची को मान को ना young professional मान को जापान ने 2,900 people committed suicide due to overwork in 2023. So आकु कैरोसी को जाय this situation is known as कैरोसी कोन जापान ने गोटे वर्ष रे 2300 रु अधिक लोक सुसाइड करिछन जापान one of the only developed state कहि परिबा हमें in Asia. So it workload एते अधिक overwork एते अधिक so 2,900 people committed suicide. India रे जदि हमें देखिबा 2022 रे workplace stress पई 11,486 private sector professionals they committed suicide. Problem कोन ना companies they prioritize profit and productivity. They pressurize the employees कोन पई they pressurize employees to meet unrealistic agenda or to meet unrealistic targets कौन कहली unrealistic target कंपनी तार प्रॉफिट एवं प्रोडक्टिविटी बढ़िया पई प्रेशराइज करियो को मानकु ना प्रेशराइज करूची unrealistic टारगेट को मीट करिया पई तार एम्प्लॉय मानको सो फाइनली समस्तन को तो लाइवलीहुड दरकार समस्तन को जॉब दरकार सो इट लीड्स टू ओवरवर्क causes chronic stress ये कौन करतना chronic stress continuous stress anxiety and sometimes it leads to suicide chronic stress माने continuously यदि गोटे लोक stress condition रे रहे ताले anxiety create हो anxiety बढ़िया द्वारा बॉडी रे मेटाबॉलिज्म रेट ता लो हो जाए मेटाबॉलिज्म लो हो गेले ऑटोमेटिकली आर नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमन माइंड एवं ह्यूमन बॉडी ऊपर पड़े सो जो गुडा हाई प्रेशर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्नोलॉजी फाइनेंस से माने ओवरवर्क ऊपर अधिक इंपोर्टेंस देंती एंड दे इग्नोर द ह्यूमन कॉस्ट प्रथमे हमको पूछवा दरकार ह्यूमन कॉस्ट इज इंपोर्टेंट कंपनी रो प्रोडक्टिविटी इज नॉट इंपोर्टेंट हमें कहया जीडीपी बढ़ाई दिलु प्रोडक्शन बढ़ाई दिलु प्रोडक्टिविटी बढ़ाई दिलु बट कहां पई बढ़ाई दिस इज आफ्टर ऑल दिस इज फॉर द वर्कफोर्स दिस इज फॉर द पब्लिक ऑफ द कंट्री जेतोर से लोक ही बंचिनी तो जीडीपी बढ़ी प्रोडक्शन बढ़ी कि लाभ कोन अछि so this is a very harmful culture which prioritizes activity over mental health personal well-being जो जाउ समान को दरकार कोन मोर प्रोडक्शन कोन दरकार ना अधिक और अधिक प्रोडक्शन दरकार सो देखिबा हम जो सुसाइड करूछंदी मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कमिटिंग सुसाइड करिवे पछरे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड एटी जन सोशियोलॉजिस्ट को थ्योरी ऊपर मु डिस्कशन करिवि Durkheim's view on sociology view on suicide ये जन सोशियोलॉजिस्ट तांकर व्यू ऊपर हम डिस्कशन करिवा जे सुसाइड करिया पछरे व्हाट आर द सोशियोलॉजिकल कॉजेस बा को कारण मानक पई गोटे लोक सुसाइड कमिट करे ता ऊपर हम वर्तमान डिस्कशन करिवा सो फर्स्ट he argued that suicide can be a result of not only psychological or emotional factor but also social factors ये कोची psychological factor भी plus social factor कोन एडी कहली psychological factor as well as social factor so social integration that is the factor which causes suicide or which causes suicide कहि परिबा बा which instigates suicide कहि परिबा
कहीं तीनटा फैक्टर ऊपर वर्तमान मैं डिस्कशन करी मोस्टली सुसाइड रो डिफरेंट टाइप ऑफ सुसाइड ऊपर हम डिस्कशन करबा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सुसाइड इज इगोइस्टिक सुसाइड कोन कहली फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सुसाइड इज इगोइस्टिक सुसाइड सो ये कोड आसुची इगोइस्टिक सुसाइड कोड क्रिएट हो बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू द सोसाइटी कोन कहली लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द सोसाइटी सोसाइटी रे गोटे लोक इंटीग्रेट हे पारो सोसाइटी रे से मिसी पारो एंड फाइनली दिस social exclusion from the society leads to suicide or suicidal tendencies so ये कहूची एटा को कंडीशन में इगोइस्टिक सुसाइड कमी जाए if the density of the family is more family रे जति अधिक लोक अछन if there is someone to take care of the person emotionally जति लोक को रो ही इमोशनल केयर न पय कोन लोक अछन जते पाकर फैमिली मेंबर अछन टू सपोर्ट द पर्सन ड्यूरिंग द इमोशनल ब्रेकडाउन ताहाले इगोइस्टिक सुसाइड कमी जिवो सेकेंड कैटेगरी इज अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड ये केतेबेल ये कहूची जेतेबेल सोशल ग्रुप रे इन्वॉल्वमेंट अधिक होय जाय एठी सोशल ग्रुप रे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लो इगोइस्टिक सुसाइड रे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड रे सोशल ग्रुप रे इन्वॉल्वमेंट टिक अधिक थाए सो मानेकर फॉर एग्जांपल मु कहूची मानेकर लेट्स टॉक अबाउट अ हाइजैकर जेतेबेल गोटे हाइजैकर आसुची बा गोटे मु कहबी सुसाइड बॉम्ब किलर सुसाइड बॉम्बर जे से सोशल ग्रुप से एते अधिक मिसी जाईची कि से ग्रुप रो ऑब्जेक्टिव को सैटिस्फाई करिया पई से ग्रुप रो ऑब्जेक्टिव पाखरे पहुंचिया पई सेता निज जीवन दे दिया पई मध्ये प्रस्तुत अछि सुसाइड बॉम्बर कोन करे से जानि छि कि मु मरि जीव बॉम्बिंग कला परे मु मरि जीव स्टिल द पर्सन इज वेरी मच इन्वॉल्वड एंड हैज इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट द पर्सन वेलकम्स हिज डेथ with own interest and knowing all the facts knowing all the circumstances and consequences से suicide commit करूची काहे कि देखो altruistic suicide because से जानि छि बा से ऑर्गेनाइजेशन नो इन्वॉल्वमेंट से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड गोल से लोक पय अधिक इंपोर्टेंट एज कंपेयर्ड टू हिज लाइफ सो सेटा निज लाइफ टाकू मध्ये दे देबा पय प्रस्तुत था देन द थर्ड वन इज एनोमिक ये कहीं की हुए ना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल रेगुलेशन ये केते बेला आसे ना तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस इज देयर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज देयर माने करो फाइनेंशियल लॉस हो गला डिवोर्स हो गला सो कोनोसी प्रकार ऑल ऑफ सडन कोनोसी प्रकार गोटे सेटबैक को लाइफ रे से एडजस्ट करि पानी ऑब्जर्व करि पानी सो द पर्सन कमिट सुसाइड ताको कोनदी एनोमिक सुसाइड देन इज फैटलिस्टिक सुसाइड कोन व्हेन जेतरा हम गोटे लोक को टाइट रेगुलेशन अंडर रखिबा टाइट रेगुलेशन माने कोन देखिथिबे पूर्वरु अनेक गोटे लोक ऊपर कोन होतला प्रोसिक्यूशन करा होतला माने अत्याचार करा जाउतला बा सेमान को कला पानी जेल ना समस्त सुनिथिबे कला पानी रखा जाउतला सेमान को टाइट रूल रेगुलेशन रखा जाउतला सो जो सेमान को पाके सेठी किछि लिबर्टी नाही पर्सनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किछि भी नाही सो दे प्रिफर टू कमिट सुसाइड सी जगह सेमाने सुसाइड कमिट करिया पई प्रिफर करछन बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी चॉइस टू देयर लाइफ एवं बंचिबा को इच्छा भी नाही बिकॉज़ दे आर अंडर tight regulation or under high expectation so automatically there is sense of self ba sense of individuality नष्ट हो जाउची and the person commits suicide तो कहते हैं fatalistic suicide तो इंडिया रे ये गला चारि प्रकार सुसाइड ऊपर डिस्कशन करली नाउ इंडिया रे व्हाट आर मेन ड्राइवर्स ऑफ सुसाइड रिस्क इंडिया रे सुसाइड बढ़ोची काई देयर आर सर्टेन जनरल फैक्टर कोन ना पीपल आर नॉट हैप्पी कोन कहली पीपल आर नॉट हैप्पी that's why they are committing suicide now the question not happy ro artha kon खुशी का what is happiness now we cannot define happiness kahi ki this is a very much qualitative term the meaning of happiness differs from person to person gote loko pai happiness ja a gote loko pai happiness se anu so the meaning of happiness differs from public to public or from person to person now people commit suicide when they are not happy it means if they are not able to attain the goal they have targeted jaha goal करथिले टारगेट करथिले पहुंच पले they will commit suicide then individual कोन नै जदी mental health issue अछि substance abuse अछि precipitating events अछि like relationship problem ए जगह रे से सुसाइड करूछि सोशल फैक्टर कोन ना जदी सोशल सपोर्ट नाही बा जदी हरासमेंट कंटीन्यूअस हरासमेंट होछि वर्क प्लेस रे let's say there is a politics in the workplace there is economic जदी फाइनेंशियल लॉस होची फाइनेंशियल हार्डशिप देखि गोटे लोक बते कोठी तंकर टंका नाही
ताल मध्ये से सुसाइड कमिट करूछ. Now there are certain socio-cultural norms also for which women they constitute 27% of the total suicide in India. So socio-cultural norms किछि रहउची like early marriage, limited mobility, restricted financial autonomy है ई सब कारण मानक पई वुमेन मानक केस रे सुसाइड बढ़ुची. Early marriage, so the ladies not able to cope up with the family. Then limited mobility, तबरे हम restriction लगै दुचे कि जगह को जाय परबो से जगह को जाय परबो. Article 21 violated mental stress, then suicide. आउ किछि जगह रे देखिथिबे जेतोल छोट पिला माने बड़ होई जानती एवं दे ग्रो एंड दे लेफ्ट देयर होम चंद्र ता घर छाड़ी देंती. It leads to empty nest syndrome. It leads to empty nest syndrome. सेति women commit suicide. Then there are issues related to marriage like domestic, physical, emotional abuse, dowry related issues. ये सब कारण मानक पई मने women मानक केस रे हमको अधिक और अधिक सुसाइड देखियो को मिल जाय. Now student मानक केस रे प्रॉब्लम कोन जो माने यंग एज रो अछन से मानक केस रे प्रॉब्लम कोन ना एकेडमिक डिस्ट्रेस. पूर्व देखथिबे जो माने नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेप्यूट रे पढुचंदी many of the students from IIT and IIM they are committing suicide because of academic stress. Because of academic stress एते अधिक स्ट्रेस पड़े तांको से they are forced to commit suicide. Now which is important qualification from a national institution of repute or your own life. Now people commit suicide without understanding the basic values or the basic necessities of life. Then is social expectation. Social expectation कोन समस्त जानि छथि गोटे पर्टिकुलर एज ग्रुप परे social expectation starting from the family to the relatives आसीबो कि ये जॉब करो. पाठ सरिला ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सरला 23 25 रे within 1 year 2 year 3 year competitive exam दो can crack the competitive examination be in a post. गोटे सरकारी चाकरी करू बा पीएसयू रे चाकरी करू बा पीएसबी रे चाकरी करू. So that is the social expectation. When there is a lot of social expectation, गोटे लोक ऊपर ओवर बर्डन हो जाए social expectation, the person is forced to commit suicide. The person is forced to commit suicide. It is basically young age population. Social media and internet. Social media and internet communication को हमें use करते as a very much positive factor in our life. It diminishes distance between two places or between two people. But social media, unnecessary use of social media and internet, sometimes it promotes suicide. It promotes suicide as well. Now, what are the consequences of suicide? If the rate of suicide increase होके जाए, ताले यार impact कौन पड़े? यार impact कौन पड़े? ना first is emotional trauma. For society, increased risk of copycat suicide. Copycat suicide कौन? यदि जने suicide कला, किसी गोटे कारण ताकू देखी कि तापर series suicide चलियो. जने suicide करूची कौनसी कारण ताकू देखिला पर series suicide चलियो. ताकू देखियो कि motivated है कि से को movie suicide. ताकू कहते copycat suicide. तो हेल्थ केयर सिस्टम ऊपर इंपैक्ट पड़ुची. लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होची से लोक वंचित थे एटलीस्ट जीडीपी को ऐड करथांदा. तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सुसाइड. नाउ सुप्रीम कोर्ट रे देखा इंपोर्टेंट जजमेंट ऊपर हम डिस्कशन करी. पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट एटी कहले राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ. राइट नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ. राइट टू लाइफ कोन कहूची ना नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ. ता माने फोर्स्ड लाइफ कोन जन को जदि अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन अत्याचार करा जाउची ताको एमदी गोटे कंडीशन रे रखा जाय छी जोटी से पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ मतलब सेल्फ आइडेंटिटी से पाउनी से जगह से सुसाइड कमिट दैट इज फोर्स्ड सुसाइड. सो 21 includes not to live a forced life. Then the second judgment is related to your 𝐎𝐃𝐈𝐀 versus state of Punjab 1996. It is Supreme Court कहले कि right to life under article 21 doesn't include right to die or right to be killed. So ये कहते हैं right to life doesn't include right to die. बंचिवार अधिकार टा मरिवार अधिकार को include करू नहीं. So the court accordingly held that the section 309 of IPC is not violative of article 21. 309 is related to your section 309 जोटा पूर्व रो IPC थिला सेटा है कोन थिला related to your committing suicide. Committing suicide. ठीक है ये गला गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक. तापर हम जवा नेक्स्ट टॉपिक को. नेक्स्ट टॉपिक को जीवा हमें टॉपिक 2
mental health. Mental health same related topic. तो topic 2 first mental health discuss करियो तापर next topic को जिवा. Mental health कहले हमें कोन बुझे? What is the meaning of mental health? WHO रो गोटे definition अछि. World Health Organization रो गोटे definition अछि mental health रो. ये कोइ state of well being को हमें कहूचे mental health. जो जगह every individual should realize his or her own potential. जोटी हमें निज potential को जानि परिया. जोटी where we can work productively. Productively means we should be able to add something to the. We should be able to add something to the GDP. Contribute to his or her own community. Community को किसी contribution होइबा दरकार. जोटा normal stress of life ताको cope up करिया दरकार. साधारण stress को cope up करिया दरकार. जोटा generally life रे आसे तो ताको cope up न करी को suicide करू, then that is a separate tendency. So this definition is given by WHO. मुझे mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with normal stress of life, can work productively, and is able to make a contribution to his own community. ए condition को satisfy कले हमें ताको कहूचे known as your mental health. This is the definition of mental health. हमें देखियो सबुटु अधिक मेंटल हेल्थ इश्यूज को ग्रुप रो लोक मानक पाखरे पडुछ. सबुटु अधिक कहा पाखरे अछि इंपैक्ट देखियो मोर देन 75. का पाखरे मोर देन 75 सबुटु अधिक. काहे कि मोर देन 75 रे प्रॉब्लम कोन? सेमानकर प्रॉब्लम कोन? ना प्रॉब्लम होती रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज. कोन कहली हेल्थ इश्यूज सेमानकर सबुटु अधिक प्रॉब्लम. आउ कोन? इमोशनल लॉस बा इमोशनल सपोर्ट नाही. हेल्थ इश्यू जो गुडा को बेसिकली क्रोनिक, नो इमोशनल सपोर्ट हैला मोर देन 75. देन सब टोटल को 45 टू 59. ये समय प्रॉब्लम कौन है? 45 टू 59. 45 टू 59 में बेसिकली क्रोनिक हेल्थ इश्यू गुडा को स्टार्ट हुए हेल्थ इश्यू. देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैमिली माने चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ डॉटर सन, जॉब ऑफ डॉटर सन, ये सब प्रॉब्लम हमको देखिया को मिले ये एज ग्रुप पे. देन 60 टू 74 अगेन सेम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. तापर 25 टू 44 दिस इज फाइनेंशियल इश्यूज, मोस्टली फाइनेंस रिलेटेड. 18 टू 24 दिस इज रिलेटेड टू कैरियर, this is related to career. So there are different conditions for different age group. Mental health रा problem कौन होची ना, हम already discuss कली. This is a loss to the economy. How it is a loss to the economy? How it is a loss to the economy? Because no addition to the GDP. No addition to the GDP. GDP को किसी addition होची, nothing contributed to the GDP. Demographic dividend रा loss. Demographic dividend माने जोड़ा हम देखते working age group रे अछन. वर्किंग एज ग्रुप रे अछन. वर्किंग एज ग्रुप रे प्रॉब्लम कोन? जछ मानकर डेथ हे जाय. जीडीपी कंट्रीब्यूशन किछ होबन. जीडीपी को कंट्रीब्यूशन किछ होबन. तो इंडिया रे जदि हम देखिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग. सो मोर देन 50% पॉपुलेशन दे आर बिलो द एज ऑफ 25. सेति पई मेंटल हेल्थ केयर रा आवश्यकता इंडिया रे अधिक रो अधिक अछि. कोन पई कहली? ए कारण रु इंडिया रे मेंटल हेल्थ केयर रा आवश्यकता अधिक रो अधिक अछि. ओके. So mental health care केते जन दरकार? जदि हम देखिया एस्टिमेशन कहूची कि 150 million people they need mental health care. So इटा as per national mental health survey 2015-16. 2015-16 रे गोटे सर्वे हैला जोथरा हम देखिले केते लोकन को मेंटल हेल्थ सपोर्ट दरकार ना. दिस इज 150 million people. दिस इज 150 million people. तो जते बेले मेंटल हेल्थ इश्यू बढ़ुची ऑटोमेटिकली पब्लिक हेल्थ बर्डन भी बढ़िबो. पब्लिक हेल्थ बर्डन टा भी सरकार ऊपर बढ़ी जो, सरकार रे खर्च मध्ये बढ़िबो, सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ी, रिसोर्स इंक्रीज हो, डॉक्टर पेशेंट सॉरी डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट नर्स मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बढ़ियार भी आवश्यकता रही. इंडिया रे जदि हम देखिबा मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स दैट इज वेरी लो. फॉर 1 लाख पीपल साइकियाट्रिस्ट कहते ना 0.3, नर्स 0.12, साइकोलॉजिस्ट 0.07, सोशल वर्कर 0.07. So GDP रो परसेंटेज हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट रे बढ़िया दरकार. तो एटी यार बेस्ट सॉल्यूशन कोन ना? बेस्ट सॉल्यूशन होची सबडा अवेयरनेस. जदि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज सो एटा बुझिया दरकार. जो माने मेंटल हेल्थ इश्यू रे दोज हु आर अफेक्टेड दे आर मोर प्रोन टू बी अब्यूज.
मोस्ट ऑफ द टाइम से मानको अधिक अब्यूज करा जाता है, मेंटल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सो इट लीड्स टू अ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, एमानकर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एटी हेता है काहे ना बिकॉज़ से तो किछि कहि परिबोनी, द पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ हैला। सो वे फॉरवर्ड कोन ना डिजिटल इनिशिएटिव हम क्रिएट करि परिबा, कम्युनिटी पार्टनरशिप करि परिबा, एनजीओ मोस्ट इंपोर्टेंट, एनजीओस दे कैन पार्टिसिपेट, पीपीपी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड रही परिबो। So telemedicine like your schizophrenia research, इटा गोटे बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इटा 1984 रहितला, यार ऑब्जेक्टिव होची क्वालिटी हेल्थ केयर एवं रिहैबिलिटेशन को मानको ना टू दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, जो माने मेंटल डिसऑर्डर रे अछंती सेमान क्वालिटी हेल्थ केयर दबो एवं सेमान को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करियो, कोन करिवो सेमान को क्वालिटी हेल्थ केयर दबो एवं सेमान को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करियो हला। एटा कोडी अछि, एटा चेन्नई रे अछि, चेन्नई रे अछि। ओके, सो ये कोलैबोरेशन को मानक सहित करिछि, ये कोलैबोरेशन करिछि वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन का सहित कहली, वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन, देन योर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंडन, ऑक्सफार्म होची गोटे एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ ऑक्सफार्म, देन एम्स जानिथिबे समस्ते, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, टीस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, देन योर एमजीआर मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, एमानक सहित कोलैबोरेशन करिछि। So देखो जो कोलैबोरेशन हेछि, दिस कोलैबोरेशन इज वेरी मच इफेक्टिव, फ्रूटफुल कोलैबोरेशन, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन मानक सहित ये कोलैबोरेट करिछि, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्क रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन समस्त सहित कोलैबोरेट करिछि। तले वेब फॉरवर्डर कोन हे पारे ना, जेहेतु हेल्थ केयर गोटे स्टेट सब्जेक्ट, जेहेतु हेल्थ केयर गोटे स्टेट सब्जेक्ट, सो इट बेटर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फाइनेंशियल सपोर्ट दी परिबा गवर्नमेंट रो, साइकोट्रोपिक ड्रग्स ये सब अवेलेबल होवा दरकार इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। ये गला मेंटल हेल्थ इश्यू रिलेटेड डिस्कशन, फर्स्ट और सेकंड टा इंपोर्टेंट मन रखियो, समस्त मिसई की पढ़ियो दिटा। तापर हम आसबो थर्ड कांसेप्ट को आजिरा, दैट इज क्रिएटिव इकोनॉमी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी कहले हम कोन बुझुचे, ये कहूचे इकोनॉमिक activity which are driven by idea generation, which is driven by knowledge, driven by creativity, driven by cultural expression, कौन कहली driven by cultural expression, driven by idea generation, ताको हमें कहूचे creative economy, ताको हमें कहूचे creative economy। so ये को इंडस्ट्री को इंक्लूड करूची ना, जो इंडस्ट्री गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करचंती रिलेटेड टू आर्टिस्टिक, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी, को रिलेटेड ना आर्टिस्टिक, कल्चरल एवं इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी रिलेटेड। सो को फैक्टर जाउचे थरे हम देखियो, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी ना, कल्चरल और आर्टिस्टिक सेक्टर जेमति कि प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लाइव परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक, फिल्म, टेलीविजन इंडस्ट्री, डायरेक्शन दवा, स्क्रिप्ट राइटिंग करबा, एडिटिंग करबा, डिस्ट्रीब्यूशन करबा, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ओपेरा परफॉर्मेंस, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, क्राफ्ट्स, then your media and entertainment like publishing, book publish kariya, magazine, newspaper, online content publish kariya, broadcasting, radio, television, podcasting, ये सब आछन हम। design and fashion, graphic design, advertising, branding, multimedia, clothing, accessories, textile industry, जोटा हमर fashion designing पहुंचे जा। then architecture associate designing buildings, space, urban planning, then your digital and new media like animation, visual effect, जाको VFX पहुंचे, application development, mobile application development, software designing, content creation, basically जोड़ा online video production for YouTube, TikTok, blogging, your influencer marketing करिया by the influencers, then is heritage and museum, जहाँ cultural heritage पहुंचे, museum, gallery, historical preservation, tourism, creative tourism experiences which leverage local culture, art, tradition, ये सब। ताले इसु हम प्रथमे जानिले व्हाट इज क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी रो वर्तमान में देखियो इंपैक्ट कोन, व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। प्रथम कथा हला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
एटा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एटा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एटा टेक्नोलॉजी नो डाउट टेक्नोलॉजी ड्रिवेन बट मशीन ड्रिवेन नुहे लेबर जते समय क्रिएटिविटी को बढ़ाइबो काम करिक जने लिखुची कविता जने गीत लिखुची स्क्रिप्ट राइटिंग करूची एटा लेबर इंटेंसिव नो डाउट लेबर ही दरकार एटा काउ के लिख परिबे सो फिल्म डायरेक्टर फैशन डिजाइनर ये सब बोले लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दउची फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी दउची सेम लोक डिफरेंट जगह रे काम करके इनकम जनरेट कर पारे देन एक्सपोर्ट ऑफ क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज कौन कहली एक्सपोर्ट ऑफ क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेन कंट्री को हम एक्सपोर्ट करछे लाइक फिल्म म्यूजिक वीडियो गेम्स डिजाइनिंग सर्विस योर आईटी आईटीएस सर्विस सॉफ्टवेयर सर्विस इवन मल्टीमीडिया सर्विस हॉलीवुड रे बहुत गुडे मल्टीमीडिया सर्विस इंडिया रो एक्सपोर्ट करा जाउची इंडियन माने करछन सेठी काम देन इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क पेटेंट सो ये सब कोन करछना बेसिकली क्रिएटर को मोनेटाइज करिया पई ता आईडिया को कहूची माने करो लेट्स से मु गोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करछि बा मु गोटे कविता लिखछि बा गोटे गप लिखछि गोटे बुक लिखछि ता ऊपर मोर कॉपीराइट अछि देन आई कैन यूज दैट आउ कहीं सेटा को यूज करि परिबे तमछि मोर इनकम को ऑगमेंट करिवो इनकम जनरेशन करिवो मो पई देन इनोवेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट ये डिफरेंट क्रिएटिव हब क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करछि लाइक योर सिलिकॉन वैली टा कोन पई फेमस ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो कहू जामे बा आईटी आईटीएस प्रोडक्ट पई फेमस सो ये ए टाइप रो डिस्ट्रिक्ट बा ये टाइप रो क्रिएटिव हब क्रिएट करिया को जाउछि अर्बन रीजनरेशन करिया पई जाउछि सो जो गुडा हमें देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ई कॉमर्स फॉर क्रिएटिव्स लाइक मु कहबी योर रेड बबल शॉपिफाई सो एमाने आर्टिस्ट डिजाइनर मानन को फैसिलिटेट करछंदी ग्लोबली से मानकर पाखर जो आर्ट से माने सिखी चंदी बा जहा से मानकर कला अछि ताको देखिया पई सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब ताको यूज करके यू कैन रीच आउट टू थाउजेंड एंड थाउजेंड नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ऑडियंस को हम इजीली पहुंच पाए स्ट्रीमिंग सर्विस वर्तमान मिलुछ हमर को नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई यूट्यूब ताको यूज करी हम स्ट्रीम करि परिबे सो दैट हम रिचेबिलिटी को इंक्रीज करा जाय पारे देन क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर मानकर नंबर मध्ये बढ़ी गिग इकोनॉमी ऊपर हम पूर्व डिस्कशन करथिल आई थिंक क्लास 1 की 2 रे गिग इकोनॉमी ऊपर एटी गोटे डिस्कशन है ये कहूछ क्रिएटिव फील्ड रे फ्रीलांस रे काम करिया पई एटी नंबर ऑफ वर्कर मान को बढ़ेबो लाइक अपवर्क फाइवर वेहांस माने कोन करथुन ना जो माने फ्रीलांसर मान को काम करिया पई सुजोग दोछन सो एटी ये गोटे क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म then content creation economy youtubers podcasters bloggers समान मध्ये significant income generate करछन blockchain बा जहा को कह जाउची nft non fungible tokens बा blockchain technology आकु यूज करा जाउची फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन सो मोनेटाइज कर परबे इजीली सब को यूज करी नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस क्रिएटिव इकोनॉमी कौन प्रॉब्लम फेस करछबा कौन चैलेंज फेस करछ फर्स्ट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू और प्राइवेसी रिलेटेड इशू intellectual property related ro artha kon now intellectual property rights it remains a challenge particularly in the digital age so it creative works can be easily copied shared and pirated now jone creative work karichi jo setar pirated version asi gala ba tar copy version asi gala tal je create करथिला creator आ किछि value रहला सेत पई intellectual property piracy ro impact होची creative economy ऊपर then access to financing so basically they face very less finance but credit opportunity to these people or to these entrepreneurs are very low then informal nature of the sector this sector nature jodi hum dekhe very much informal so many creative professionals they work as freelancer कोनोसी भी समय रे समान को काम न मिल पाए यदि काम न मिले समान informal sector जेहेतु काम करूछंती so there is no security एमान कर किछ security नाही there is digital divide रो अर्थ होची जे किछि लोक समान को पाखरे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी अछि आ किछि लोक पाखरे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नाही बा जदि हम कहबे डिजिटल लिटरेसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किछि लोक मान को पाखरे अछि समस्त को पाखरे नाही जो मान को पाखरे अछि दे कैन बी इन्वॉल्व ओनली इन दिस क्रिएटिव फील्ड जो मान को पाखरे एक्सेस नाही से माने इन्वॉल्व हे परिबे नाही सिंपल जिंस so these are the problems
or the challenges. Then government policy, creative economy pai something kichi basic government policy basic strong nahi, but kichi some of the economic policies are there, like tax incentive, tax grant, subsidy, ये सब, intellectual property protection, cultural investment funds to foster national culture, art, heritage, UNESCO Creative Cities Network. UNESCO Creative Cities Network is a platform which promotes cooperation among cities which have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development. Then cultural diplomacy. Cultural diplomacy कौन? Creative industry को government use करी पारिबो as a part of cultural diplomacy. कौन पाई? ना international relation को strengthen करिया पाई या को use करा जाय पारिबो. So national culture को promote करी पारिबो. हमें like योगा soft power ऊपर मु discussion करिछि पूर्वरु. India soft power को हमें India is basically a soft power, not a hard power. Hard power किए जे डिफेंस इक्विपमेंट्स को अधिक फोकस करे बा मिलिटरी स्ट्रेंथ जो कंट्री अधिक यूएसए रशिया एमाने हार्ड पावर. सॉफ्ट पावर किए जे तार कल्चर को प्रमोट करछि, कल्चर को प्रोटेक्ट करछि, तार कल्चर होछि तार बेस्ट वेपन, ताको हम कहू सॉफ्ट पावर कंट्रीज. ये गला क्रिएटिव इकोनॉमी रिलेटेड डिस्कशन. नाउ कम टू द फोर्थ टॉपिक. फोर्थ टॉपिक ऊपर हम वर्तमान डिस्कशन करिया. अनदर इंपोर्टेंट स्कीम द मुद्रा योजना. एको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोले कहा जाए. ये अप्रैल 2015 में लॉन्च होता है. ऑब्जेक्टिव कोन ना जो माने स्मॉल एवं माइक्रो एंटरप्राइज से माने को ये फाइनेंस दो. सो इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एनहांसेस एक्सेस टू क्रेडिट फॉर नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस, प्लस ये अल्टीमेटली बूस्ट करछि इकोनॉमी को बाय एम्पावरिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. यार ऑब्जेक्टिव कोन? प्रथम ऑब्जेक्टिव होछि फाइनेंशियल इंक्लूजन. Financial inclusion अर्थ होछि it will provide easy access to financial services for small business and micro enterprises. It will promote entrepreneurship. It encourages individuals, especially youth, women, marginalized section of the society, समान को promote करूछि. Employment opportunity create करूछि. Small business create करूछि, employment opportunity दउछि. Micro enterprise sector को promote करूछि. Micro enterprise sector को promote करूछि. एथिरे तीनटा कैटेगरी लोन अछि. 3 कैटेगरी ऑफ लोन. फर्स्ट ला शिशु. शिशु रे लोन अमाउंट होछि अप टू 50000 टका. केते? अप टू 50000. तो जो माने मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप को दरकार, जो माने अर्ली स्टेज रे अछि से माने ई लोन नै पारि. जो माने न्यू वेंचर स्टार्ट करछन और जो माने बिजनेस स्टार्ट करछन इन देयर इन्फेंसी इनिशियल डेज रे अछि से माने नै पारि. देन किशोर रे लोन अमाउंट होछि 50000 1 टका रे 5 लाख टका. किए ना जो माने ग्रोथ स्टेज रे अछंती, ऑलरेडी तांकर किछु गोटे स्टार्ट करिसथि, एबे बढ़िया पई चाहउछन, सो शिशु लोन नै पारि. कैपिटल इन्वेस्टमेंट पई नै पारि, इक्विपमेंट परचेज करिया को नै पारि, बिजनेस एक्सपेंशन पई नै पारि. देन तरुण रे 5 लाख रे 1 ରୁ 10 लाख पर्यंत जो माने एस्टैब्लिश बिजनेस से माने ताको बिजनेस को आहुरी अधिक एक्सपांड करिया पई चाहउछन, से माने को मिलियो तरुण अंडर रे से माने नै पारि. सो मीडियम साइज ऑपरेशन, मशीन अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब पई से माने देख. ताले इतरे एलिजिबल बेनिफिशियरी किए ना जो माने स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, सर्विस एंटरप्राइज लाइक ब्यूटी सैलून, ये सब शॉपकीपर, ट्रेडर, आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन, एग्रीकल्चरल बिजनेस जो माने करछन, फूड वेंडर, हॉकर, स्मॉल रोड साइड बिजनेसमैन, ए माने सब दे आर एलिजिबल फॉर मुद्रा लोन. तो ये कहां अंडर रे आसुची? को एजेंसी अंडर रे ना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. So this is responsible for refinancing loans given by bank. एठी लोन दबो किए ना दबो बैंक. बैंक को रीफाइनेंस करछि किए ना करछि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. मुद्रा बैंक रो ऑब्जेक्टिव कोन बा रोल कोन? ऑलरेडी कहलिए रीफाइनेंस करिवो, देन क्रेडिट गारंटी करिवो, क्रेडिट दबो, जो क्रेडिट बैंक देछि ताको गारंटी दोछि. देन फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेबो. फाइनेंशियल लिटरेसी रो अर्थ होछि जो लोन दिया गला से लोन को केमति प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके से थ्रू इन्वेस्टमेंट कला पर आउटकम पाइ पारे. ताले प्रॉब्लम होछि लोन डिफॉल्टर जो माने लोन नउछनी बट पेमेंट रीपेमेंट करनादी. सो बैंक रो एनपीए बढ़ी जाउछि, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज होछि. लिमिटेड फॉलो अप एंड सपोर्ट. मुद्रा लोन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करूछि, बट एंटरप्रेन्योर मानक द्वारा एंटरप्रेन्योर मानक पई कंटीन्यूअस सपोर्ट रा आवश्यकता अछि. बिजनेस मेंटरशिप रिक्वायर्ड, टेक्निकल असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. ये सब ठीक समय रे मिल पारु नै. खाली तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग कर देला हबनी, तार यूटिलाइजेशन केमति करा जीवो बा त टेक्निकल असिस्टेंस कोन सेटा मध्ये बुझिबा दरकार. लोन साइज
बेसिकली तरुण कैटेगरी जो माने समान कहया कथा कि द लोन दिया जाउछ दैट इज नॉट सफिशिएंट एक्चुअली भी 50,000 up to 50,000 but 50 to 5 lakh, so the loan amount is very small, high amount of loan is required. Then regional disparity किछि स्टेट रे हायर प्रोपोर्शन ऑफ लोन दिया जाउछि आउ किछि स्टेट को कम प्रोपोर्शन ऑफ लोन दिया जाउछि रूरल एरिया को मुद्रा लोन कमी जाउछि अर्बन एरिया रे मुद्रा लोन अधिक प्रोपोर्शनेट रे दिया जाउछि सो ये रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करूछि ये वाला एवरीथिंग अबाउट मुद्रा लोन तापर में आसीबा योर मिशन शक्ति ये गोटे इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव कोन वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट सो गवर्नमेंट रा कमिटमेंट ये देखौछि वुमेन लेड डेवलपमेंट बाय एड्रेसिंग इश्यूज अफेक्टिंग वुमेन ऑन अ लाइफ साइकिल ऑफ कंटिन्यूम बेसिस सो मिशन शक्ति रो अंडर दीटा स्कीम अछि सब स्कीम गोटेला संबल आ गोटेला सामर्थ्य कोन कहलु संबल आ सामर्थ्य संबल इज बेसिकली फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन तो या अंडर अनेक गुडे स्कीम आसे लाइक वन स्टॉप सेंटर वुमेन हेल्पलाइन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सो मिशन शक्ति रो ऑब्जेक्टिव मु ऑलरेडी कहली जो माने it includes all the women, it includes the girls including differently abled socially economically marginalized section of the society एमान को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करूची सो होलिस्टिक एम्पावरमेंट एवं डेवलपमेंट करबा होची मिशन शक्ति रो बेसिक ऑब्जेक्टिव सो मिशन शक्ति रो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इज आइदर टू प्रोटेक्ट और असिस्ट वुमेन who are victims of violence so या अंडर मिशन शक्ति अंडर किछि इंपोर्टेंट बा मिशन शक्ति रो किछि इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अछि कोन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एक होछि इमरजेंसी इमीडिएट सर्विस शॉर्ट टर्म केयर इमरजेंसी इमीडिएट बा शॉर्ट टर्म केयर रे हम देखु जे देयर इज अ 24 आवर हेल्पलाइन 24 आवर टोल फ्री हेल्पलाइन जहां थ्रू टेंपरेरी शेल्टर योर लीगल एड साइको सोशल काउंसलिंग प्रोवाइड करा जाउछि देन इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोटी रिहैबिलिटेशन करा जाउछि बा जोटी फिजिकल फाइनेंशियल सोशियोलॉजिकल स्टेटस को थमानकर प्रमोट करा जाउछि देन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फॉर डिग्निटी एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये कहउछि वुमेन मानक अगेंस्ट रे जो क्राइम होउछि ताकू रिड्यूस करिया पई चाहउछि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बा जेंडर स्पेसिफिक क्राइम गुडा को रिड्यूस करिया पई चाहउछि देन संबल स्कीम अंडर में कहली वन स्टॉप सेंटर एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यार ऑब्जेक्टिव कोन ना जीरो बजट एडवर्टाइजमेंट दिस इज बेसिकली टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग गर्ल्स सेल्फ डिफेंस कैंप कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स टॉयलेट ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रे आसुछ देन वन स्टॉप सेंटर यार ऑब्जेक्टिव कोन ना ये फॉरवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करछि टू द इंस्टीट्यूशंस और साइको सोशल काउंसलिंग प्रोवाइड करछि लीगल काउंसलर फॉर असिस्टिंग वुमेन those who are facing harassment or any other form of distress ila one stop center ro basic objective then nari adalat basically this is the alternate grievance redressal mechanism for resolving the different crimes like harassment related issues ei issue guda ko gram panchayat level le ako solve kariya pai chahu jaka हम कहू nari adalat then la women helpline यार objective कोन ना ये टोल फ्री 24 आवर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करूची को मानको ना दिस इज लाइक अ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट लाइक पुलिस फायर एम्बुलेंस सर्विस ये सब गुडा को हमें गोटे वन स्टॉप सॉल्यूशन ने पाई परियो हैला देन सामर्थ्य अंडर रे कोन आसुची ना सामर्थ्य अंडर आसुची प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन शक्ति सदन एवं सखी निवास एवं पालना स्कीम ये सब आसुची अंडर सखी निवास कोन ना सखी निवास जो माने वर्किंग वुमेन शहर मानकर जो माने वर्किंग वुमेन समान को ये कोन ना सिक्योर प्लेस प्रोवाइड करछि फॉर स्टे सो बेसिकली दिस इज वर्किंग वुमेन हॉस्टल याको वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो गुडा को पूर्व होतिला ताकू रिनेम कर दिया जायछि सखी निवास so 50 new hostels will be operationalized under the mission to run on rental model then la palna scheme कोन ना दिस इज लाइक अ क्रेच सिस्टम जो माने वर्किंग वुमेन काम करचंती एंड दोज हु हैव बेबी चिल्ड्रन जो मानक पाकर छोट पिला अछंती समान कोट रहिबे तांका पई ये गोटे सेफ और सिक्योर प्लेस प्रोवाइड करछ सो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़िया पई हेले पालना स्कीम रा आवश्यकता अछि बा क्रेच सिस्टम रा आवश्यकता अछि जोठी गोटे वुमेन लेबर रो छोट पिला सेफ एवं सिक्योर प्लेस रे रहि परिबो देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यार ऑब्जेक्टिव कोन जो मानकर लॉस ऑफ वेज बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ होछ ये से को कंपेंसेट करियो
कंपेनसेट करियो जो माने प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर बा जो माने न्यू बॉर्न बेबी अछि से मानकु ये कवर करियो पूर्वरु ये गोटे चाइल्ड जो मानकर अछि तांको कवर करथला बट वर्तमान ये जो मानकर सेकंड चाइल्ड अछि तांको मध्य कवर करूछि सेकंड चाइल्ड पर्यंत देन अ नेशनल हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन a state hub for empowerment of women district hub for empowerment of women एमानकर काम कोन ना एमानकर काम होची implementation monitoring and feedback of all components of mission शक्ति रो implementation एवं feedback कलेक्ट करबा कर ऑब्जेक्टिव जते गुडे स्कीम अछि सब स्कीम को कन्वर्ज करबा मानकर ऑब्जेक्टिव रिसर्च पब्लिकेशन जेंडर बजेटिंग होची मानकर ऑब्जेक्टिव हैला गैप फंडिंग फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन गैप फंडिंग फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ताको डेवलप करियो होची मानकर ऑब्जेक्टिव देन शक्ति सदन कथा एटी कहली शक्ति सदन रो ऑब्जेक्टिव कोन ना ये होम एवं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करूची फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन दोज बेसिकली फेसिंग डेस्टिट्यूशन से माने को रिकवर करूची बा रिहैबिलिटेट करूची अनाथ जो माने जो माने पाखर के नहा से माने को रिहैबिलिटेट करूची बा से माने को ये रिपैट्रिएशन करूची रीइंटीग्रेशन करूची इन द सोसाइटी तको हम कहू शक्ति सदन दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ शक्ति सदन सो मिशन शक्ति ऊपर हम भाबुची समस्त गोटे बेसिक आइडिया आसी देखो ये होलिस्टिकली केते दूर बा केते एक्सटेंड पर्यंत ये वुमेन एम्पावरमेंट करूची इटा कोड यूज करिवे मिशन शक्ति जहा यूज पढिला हम सोशल जस्टिस यूज करि परिवे इंडियन सोसाइटी रे मध्ये यूज करि परिवे इंडियन सोसाइटी रे यूज करिवे एवं सोशल जस्टिस रे को व्यवहार करि परिवे सो मिशन शक्ति को पढिवे भलो भाबरे बुझिवे जदि डाउट आसे या पर पछरियो मते नेक्स्ट क्लास तले हम कोन आज को टॉपिक ऊपर डिस्कशन कले ना हम डिस्कस कले अबाउट मेंटल हेल्थ then your supportive workplace then we discussed about your creative economy dita important scheme upare discussion kale mudra yojana then last one your mission shakti yela important scheme no fact figure discussed conceptual analysis with notes jaha lekhibe parikha re tar upare discussion kari kon कहली परीक्षा रे जहा लिखिबे मेंस परीक्षा रे तार ऊपर डिस्कशन करछि या आपण को जीएस पेपर रे हेल्प करिवो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 4 इंक्लूडिंग एथिक्स एस्ते पेपर रे हेल्प करिवो एवं किछि स्पेसिफिक ऑप्शनल लाइक योर पीएसआईआर हे गला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हे गला सोशियोलॉजी हे गला ए सब टॉपिक मानकर मध्ये ये हेल्प करिवो ए सब पर्टिकुलर ऑप्शनल पेपर मानकर मध्ये हमको हेल्प करिवो तेना को ठीक भाବରେ पढिबे बुझिबे आ तार नोट्स करिवो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन नेक्स्ट क्लास रे आउ अधिक डिस्कशन करिवा थैंक यू वेरी मच थैंक यू